नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा। Brochure on this brilliant time thriller. And did you see the signs of him becoming this psychotic It's really every turn there's something really romantic happening. And as someone from the what do you make of it? How did that impact you? Well, the most dramatic premise in time is it's unsolvable. That's always the biggest drama. When it starts or comes to a point where you feel, okay, this is can't be solved. Or when you come to racing against time, that's the next drama. That you have a certain deadline, you have a certain pursuit, and it has to be achieved within a stipulated time, and you can't achieve it. That's when the drama comes in. Drama doesn't always come from conflict of characters. In literature, drama comes from conflict of premises, conflict of situations and stuff like that. So over here, the race against time was the biggest drama, which more than theatre is achievable in cinema. Because cinema is about time and it plays with time. So cinema attempts drama by playing of time, making characters race against each other, and because the audience pulse is also racing and they want to save some characters are always, redeemable in the eyes of the audience, and they want those characters to be saved or those characters to succeed. And so that movement towards climax, and then any good or great book or I've lost touch with everybody in the past. We're nice listening to आप भी सर Every time, and yes, Proshin was definitely there amongst the other very, very bright writers that were in the classroom and that did write, under duress, of course. Okay, and that question, Daladi, that do you think the end justifies the means? If you ask me on a personal value system, I would say no. But then, as far as the book is concerned, the justification of the character seemed to me very logical, very logical conclusion of what he had been doing throughout. I don't want to identify. And so, yes, I mean, it followed a certain logic that the writer had thought out. To me, personally, well, I wouldn't accept it, but the thing is that it is logical in the construction and in the frame of the narrative. Thank you. Ushali. I think I would agree. I definitely do agree that as a person living in a certain society and the structures and laws and norms of society, you need to follow the rule of law. But then when the rule of law takes so long, then what do you do? And I think that is what Devi has us questioning. And so as an audience, when I'm as a reader and as an audience member watching movies and plays, I mean, like, that's when you're like, yeah, go for it, go get them. And you really, really root for the underdog, you root for the vigilante. But then when you step out of the shadows and back into broad daylight, then what? I know there's no end to it, but that is something, and I think that's a tribute to this book, that is something that set me seriously thinking. How often do we think
that look at these blatant criminals, how often do we think that why doesn't somebody just wipe them off the face of the earth? And there's such a satisfying feeling to that, but then you come back to reality and think we can't do that. It'll be like some carnival of blood and mayhem if you do. But yes, there is a certain amount of satisfaction that justice should be done. Okay, Proshul, I'm not going to ask you about this now. I want to ask you, who is your favorite crime writer? Did anyone influence you? Did you think that if you want to write, you want to be tight like somebody, or as exciting, or maybe leave things dark and mysterious? Or did you think along those lines? Who are your favorites anyway? Yeah. So I had grown up reading Sherlock Holmes. So Sherlock Holmes, Hercule Poirot, definitely my favorite characters, I would say. I had read recently Edgar Allan Poe. His works have a certain psychological effect to the stories. So that is there definitely. And being somebody from Kolkata, from Bengal, my all-time favorite had been always stories of Feluda, I would say. So even when you read a Feluda, it's like a travelogue. You get to see the city or the place where the crime is taking place. So that also had a very visual effect. So those stories also gave me an inspiration to write something which would be visually very, very attractive. So that's my answer to your question. In fact, I just want to read a short goddess. Now, Shakti, Devi, the worship of Devi, Shakti, is all at the feminine divine, is all about the fight between good and evil, conquering evil. It's all about restoring the balance between good and evil and bringing back a natural order to the universe. So is that what made you choose this as a device in your book? Yes, I would say that, like I told you when you asked me the first question, the Devi and the Akal Bodhan is what inspired me to go about this story. So definitely it's the strength, the divine power which exists, which establishes the balance between good and evil. And it's not just about a feminine power. That power can be in anybody. So that is what also is a search for Devi in this book, where you're not just looking for a murderer, you're trying to identify the protector or the entity which is trying to establish a balance between that, or establish that order over here. So that is what I would say. Various shades in this book, black, white, grey, etc. People are very frequently not what you think they are. And I think that also makes it easy for people to identify with them. So, who could you find in this book? Who are some of the characters who really made an impact on you? Because of their dichotomy, their multifaceted traits, personality. I think the entire police force actually, made quite a strong impression on me, because I do have to say one thing though, that thanks to all the movies that we watch nowadays and the books that we read nowadays, we know that the days of characters being totally black and totally white are far gone. And so you kind of expect that, okay, people may turn out to be not what you think they are, not how they're presenting themselves right now. So you're always looking for those clues, like, okay, who could it be and what is his or her secrets? You're always looking for that, and you do that brilliantly over here. So I think I was expecting people to not be who or what they are. Nowadays, in any book I read, I'm always open to the possibility that there are going to be these big surprises. What's fun is when the surprises finally reveal themselves. So that is what I definitely enjoyed about this book. The police force, a reference to the police force, Krushan, that brings me back to you. There's so much detail about how investigations happen, the storage of data, little technical details about how you beat the closed circuit CCTVs.
etc., etc. So, did you do a lot of research? What went? So yeah, research definitely was there. I tried to study the working patterns of such investigations and how they happen, and I was lucky enough to know quite a few people who are actually who belong to the police department, who were ex-cops, who had worked closely in such cases. So their experiences also gave me, you know, an idea of how a proper actual investigation happens, not just like what we see in a, you know, imaginated way. It's about how actually on ground they work. So there are quite a few details also which you would find about the murder weapons and the things that have been used, and they have been worked out in a way that you get to see the findings through the eyes of a cop who is actually investigating something in real life. आइए चलिए हम चलते हैं प्रसून राय के पास, जो कि देवी पुस्तक के लेखक हैं। हाँ प्रसून जी, बताएं, ये पुस्तक की प्रेरणा आपको कहाँ से हो? नमस्ते, मेरा नाम प्रसून रॉय है और मैं एक लेखक हूँ बाय पैशन, और मैं लिखता हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर। तो देवी एक ऐसी किताब है जिसका नाम मुझे पहले आया देवी अकाल बोधन से, और उसके बाद कलकत्ता शहर, दुर्गा पूजा फेस्टिवल, ये सब कुछ मिला के मैंने ये कहानी को बुना है। ये एक क्राइम थ्रिलर है जिसको आप बोल सकते हैं कि जिसमें ये शहर भी एक हिस्सा लेती है, ये फेस्टिवल भी एक हिस्सा बनती है जब एक क्राइम होता है, और कैसे उस क्राइम के पीछे जो कहानी है वो धीरे धीरे इस किताब में खुल के बाहर आता है। तो यही प्रेरणा है इस किताब के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि सबको ये किताब पसंद आएगी। वैसे ये किताब की कहानी किस आधार पे है? ये किताब की कहानी एक सस्पेंस है बेसिकली। जो देवी नाम है, जब दुर्गा पूजा फेस्टिवल शुरू होता है, इस किताब के हर चैप्टर में आपको नाम दिखेगा दुर्गा पूजा के हर एक दिन का, और इसी कारण से हर दिन में एक मर्डर होता है, और उस मर्डर के साथ देवी शब्द खून से लिखा गया मिलता है, और उसके साथ जो वेपन से ये खून होते हैं वो हर एक देवी का एक अस्त्र होता है। तो कौन ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये सब कुछ मिला के ये 10 दिन में ये मिस्ट्री को सॉल्व किया जाता है। तो यही कहानी है इसकी। इसके पीछे बहुत सारे और भाग है इस कहानी के, जिसमें आपको रोमांस मिलेगा, जिसमें आपको प्यार मिलेगा, जिसमें आपको सोशल एक मैसेज मिलेगा। तो यही कहानी है। मैं आशा करता हूँ सबको अच्छा लगेगा इसको पढ़ के। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, प्रेरणा मिली मुझे इस नाम से, देवी नाम से, क्योंकि देवी और अकाल बोधन जो दुर्गा पूजा का अस्तित्व है, वो नाम मुझे पहले सूझा था। तो तब मैंने सोचा कि देवी का जो कहानी है, जो वो आती है इस धरती पे आके, यहाँ पे जो ख़राब चीज़ें हो रहे हैं उसका विनाश करती है। तो वैसी एक कहानी ये है जहाँ पे आपको असत्य का विनाश देखने को मिलेगा। तो वही प्रेरणा था कि दुर्गा पूजा के टाइम पे जब दुर्गा देवी आती है और यहाँ से सब खराब चीज़ों को हमारे जीवन से वो उखाड़ के दूसरी जगह लेके चली जाती है, वैसी ये कहानी में आपको वही तरह का एक फीलिंग मिलेगा। धन्यवाद प्रसून जी, आपकी ये पुस्तक लोगों तक लोकप्रिय हो, हम ये चाहते हैं, और लोग पढ़ के इसके ऊपर आपको समीक्षात्मक टिप्पणी भी ज़रूर दें, और साथ में लोग जो चीज़ खोज रहे हैं हो सकता है वो आप इस पुस्तक में दे दिए हो। तो इसके लिए हम और हमारी सदीनामा की टीम आपको बहुत बहुत पहले से ही बधाई देती। धन्यवाद। जयशंकर गुप्ता जी, देवी जो पुस्तक आई है, जी, उसके बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो विस्तार। देवी के प्लॉट के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, ना ही उनके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ कह सकते हैं। उसके पृष्ठभूमि के बारे में कह सकते हैं कि देवी कलकत्ता में बेस्ड है, पूजा के इर्द गिर्द बेस्ड है। दुर्गा पूजा बंगालियों का सबसे अहम फेस्टिवल ही नहीं बल्कि एक अपने आप को सांस्कृतिक तरीके से इजहार करने का एक वक्त होता है, और उस वक्त शहर में कुछ क्राइम्स होते हैं, और वो क्राइम सबको जिसे कहते हैं कि सबका दिमाग और दिल घुमा देता है पूरी तरह से।
एक तो पूजा का वक्त जिस समय सब लोग बाहर होते हैं, जब पूरा शहर बाहर होता है और इसलिए सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, और उस समय जब एक के बाद एक घटनाएं घटती हैं जिसको सॉल्व करने के लिए 3 जने को जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये एक क्राइम थ्रिलर है, एक हू डन इट है, मतलब किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, इसकी खोज है जो पूजा से पहले शुरू होती है और पूजा के अंत तक हो जाती है। तो ये एक जिसे कहते हैं रोमांचक एक नावल है, एक इन्वेस्टिगेटिव नावल है, एक थ्रिलर नावल है। जिनको बंगाली कल्चर से प्रेम है वो भी उनके लिए भी रोचक है, जिनको क्राइम थ्रिलर से प्रेम है उनके लिए भी रोचक है, और जिनको एक अच्छी कहानी से प्रेम है उनके लिए भी रोचक है। प्रसून कैसे लेखक है? प्रसून एक तो बहुत सारा लिखते हैं, बहुत जल्दी लिखते हैं और बहुत तरह के टॉपिक्स पे लिखते हैं। ये प्रसून की खासियत है कि वो अलग अलग विषयों पर लिख सकता है। वो एक राजनीतिक बायोग्राफी भी लिख देता है, भूत की कहानी भी लिख देता है, और साथ ही साथ क्राइम थ्रिलर भी लिख देता है, और बच्चों की कहानी भी लिख देता है। तो ये उसके अंदर एक खूबी है, उसके अंदर ये एक पर्सनालिटी है कि वो इतने तरह से सोच सकता है, इतनी सारी दुनिया में घुस सकता है, और हमारे लिए रीडर के लिए इतनी सारी दुनिया हमें पेश करता है। तो क्या आप इसके ऊपर पिक्चर बनाना चाहोगे? मैं तो फ़िलहाल सिर्फ अभिनय करता हूँ, इसलिए मैं पिक्चर बनाऊँ ना बनाऊँ, पर कोई भी क्राइम थ्रिलर आज के डेट में ज़रूर किसी बनाने वाले के लिए एक जिसे कहते हैं कि आकर्षक बुलावा है। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा।